अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? This is just your brain tricking you. Reality is you have already studied a lot, but your mind hides those layers of effort. देखो, ऐसा सबके साथ होता है कि वो पढ़ाई करता है, बस उसे लगता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। जब मैं 12th में था, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे भी लगता था कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बट इन रियलिटी आई हैव स्टडीज अ लॉट, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट था कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। देखो, जैसा हम सोचते हैं हमारा ब्रेन उसे रियलिटी समझने लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अपने ब्रेन को बेवकूफ बना के रखना चाहिए। Shapes your habits. So instead of saying I have to study, say I'm the type of person who loves learning. It sounds small, but your brain starts believing it. हमें यही सोचना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बट डोंट वरी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू मैनेज योर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टडीज रूटीन। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ क्लियर प्लान टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी एंड अचीव मोर बेटर रिजल्ट। सो लेट्स डाइव इन विद चैप्टर 1, व्हाट यू कांट डू। पहले हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फॉर आवर क्लियर माइंडसेट। फॉर एग्जांपल, यू कांट कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन जस्ट 1 डे। देखो, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा टास्क लेके बैठ जाते हैं और एक ही दिन में कंप्लीट करने के लिए। इंस्टेड ब्रेक इट डाउन इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। You can't ignore your health while studying. Skipping meals or sleep to cream more won't help it. It will reduce your focus and retention power. You can't multitask between online lectures and offline notes without a proper system. Switching constantly leads to confusion and incomplete understanding. Remember, these limitations are not weakness but realities that guide you towards smarter approach. Chapter 2. Planning your schedule. अब आते हैं प्लानिंग पर। Start by creating a weekly timetable that integrates both online and offline sessions. Dedicate mornings to offline readings and your mind is fresh, and evening is online revision. Priorities tasks based on the deadlines and difficulties. This way you ensure balanced progress without overwhelming yourself. Incorporate breaks using the Pomodoro technique, 25 minutes of focused study followed by a 5-minute rest. This maintains your energy levels throughout the day. Chapter 3. Balancing online and offline resources. बैलेंस बनाना क्रूशियल है for online studies. Leverage platforms like Physicswala and Unacademy and etc. Combine with offline resources such as textbooks and handwritten notes for deeper comprehension. Set specific goals for each model. Let's move to chapter 4. Staying motivated and reviewing progress. Track your achievements weekly to see improvements, which builds confidence. Reward yourself milestones like a short video in the next video. Till then, keep studying.